आपको बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल सॉन्ग एक बहुत अच्छा लगा था मुझको और जी, ये वाला सॉन्ग है ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझको। थैंक यू सो मच। और बाकी बीच में जो भी रिप्लाई वर्जन आए थे वो एकदम अच्छे हैं। थैंक यू कि आपको हमारे वर्जन हमारा जो वर्जन है वो अच्छा लगा। हम लोग ने बहुत उसे प्यार से बनाया है एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप एक ऐसे लेजेंडरी और आइकॉनिक गाने को रिक्रिएट कर रहे हो। सो आपने आपको अच्छा लगा वो बहुत बड़ी बात है। Pehla Nasha is an evergreen love song. So what made you take the risk of recreating such an iconic classic song? I think it's my love for the song that made me gravitate towards recreating the song. In today's times, there are so many songs that are being recreated, that are being reproduced, remixed, but very few make you feel like the original did. And I feel like the way Amal and Rashmi Virag have come together and curated, this new version, which is Pehla Nasha 2.0, जिस तरीके से उन्होंने अरेंज किया है इसको, how the Mukhda and the Antara flows together so seamlessly. I think that it pays homage to the original version while also being a really really nice and fresh take on the song. मुझे लगता है कि आज के generation, everyone from the youth will really connect with this song, and it's something that can connect with people who loved this song before and also who haven't heard this song at all. Many fans are protected about old classics. So how do you respond to people who say classics should never be remade? वैसे, I mean, to be honest, there are lots of songs that have some really, really nice remakes. I have also been part of quite a few remakes that have actually gone on to do really well, like Ghar Se Nikalte Hi. There's also Tumhe Apna Banane Ka Junoon from Hate Story. Then we did Pyar Manga Hai Tumhi Se also. So while most of them have done well, yes, there are some that haven't really clicked with the audiences. And I completely hear when music purists and people who really love, our golden era of music, when they feel ki, if someone has taken an iconic song and usko बिगाड़ दिया है, या they've made something bad out of it. But thankfully and fortunately, in my case and with Amal's case, we have been very lucky that we've been able to create tracks in a way where the original is not tampered with, but we also add a little bit of our own DNA and our own spin to the song, and it connects with the audiences and makes them feel ki ha, this is our Pehla Nasha or this is our Ghar Se Nikalte Hi, but also it feels like a new song to them. Do you believe 90s songs today lack the innocence of 90s music? What's missing? I truly believe so. The innocent factor is very, very was very prevalent in the 90s, and slowly over the years, I think the love songs that started coming out were very, pretentious in a way, and also बहुत सारे scenarios थे where they thought of fictional circumstances or didn't talk about love in a genuine in an honest manner. And I feel ki 90s ke ganon mein that element was very very prevalent, which is why we have tried to retain that essence in Pehla Nasha 2.0. There's a certain first romance, first love, flutter in your heart kind of feeling that's there in this version, and that's something that's missing in today's songs. And I feel like the love songs that I'm known for as well, like Sab Tera, there's stuff like Saw Asman, and there are songs which we have put together, both Amal and I, over the years, that carry that innocence, because we feel like that's the kind of love that we believe in, and I think that's the kind of love that the 90s also believed in. So I'm glad that we got an opportunity to bring that innocence back and bring that purity of love back. The song is being called a perfect Valentine's anthem. So how do you personally define the perfect love song? The perfect love song is very hard to be defined. I mean, there are various factors. It depends on the situation. But
Pehla Nasha. I also have a song called Pehla Pyar. First love is a very, very universal concept. And I believe that the song that we've put together, like you're saying, that it's already, you feel like it's the soundtrack for Valentine's Day. And I truly believe so too, because the way that it's made, the way that the lyrics are written, I think it's quite shareable in a way where I feel like a guy can definitely share, lyrics from the song or words from the song with their, significant other, or dedicate it to someone that they want to woo or take out on a date. So definitely the perfect song for the season. And I just hope that it's not just for the season, but it's also here for a long time to come. I hope that it makes a place in people's hearts and their playlists. Have you ever had a Pehla Nasha moment in real life? Any special memory? I mean, I have had a lot of such instances in my life because I'm a romantic myself. And obviously, I've had a Pehla Nasha moment with my wife, Ashna, when the first time that we went out on a date. Back in 2017, I definitely felt that flutter in my heart that everyone feels when they're out with someone that they love and want to get to know better. So yeah, I definitely had that moment. अरमान आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब रिसेंटली कॉन्सर्ट मतलब बहुत हो रहे हैं और आप भी एड शीरन की ओपनिंग कॉन्सर्ट में गए जी। और एक ग्लोबल आइकन है वो, तो कैसा रहा उनके साथ परफॉर्म करके? और एड शीरन के साथ मेरी 2021 से बहुत ही गहरी दोस्ती रही है। हमने टू स्टेप करके एक गाना था, उस पर कोलैबोरेट किया था। एंड उसके बाद वो जब बॉम्बे आए थे तब I performed two step with him, and now recently I opened the show for him in Hyderabad. So it's been a great experience, working with him, and just being around with him and being just hanging out with him. बहुत ही हम्बल आर्टिस्ट है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने करियर में ऑलरेडी ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ द पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री, एंड टू बी एबल टू बी इन द सेम रूम ऑन द सेम स्टेज विथ हिम इज़ अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी. I consider that a big honor, and as an Indian artist I feel really proud of the fact that I've been able to put out a song with an artist like Ed Sheeran and also share the stage with him. And I hope and wish that more such opportunities come my way. And I hope to collaborate more with Ed. I really love him. आजकल के सिंगर्स की बात की जाए तो मतलब कि आजकल के सिंगर्स जो है गाने पे कम कंसंट्रेट करते हैं और जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो आपकी क्या राय है और आप कितने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? मैं तो बहुत ही एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन जैसे आपने कहा कि गाने पे ध्यान, म्यूज़िक पे ध्यान बहुत ज़रूरी होता है, एंड लोग वो नहीं कर रहे हैं आजकल। एंड बस यही सोच रहे कि मैं एक ऐसा क्या वीडियो डालूँ या क्या रील डालूँ जिससे मैं वायरल हो सकता हूँ। एंड आई थिंक वो बहुत ही एक शॉर्ट लिव्ड अप्रोच होता है। जिस तरीके की करियर मैं चार्ट आउट करना चाहता हूँ अपने आप के लिए, उस करियर के लिए ये अप्रोच कभी नहीं वर्क होगा कि यार एक कुछ वायरल कर लेते हैं। मैंने बहुत ही सोच समझ के जो गाने हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे करियर में, वो चुन के मैंने किए हैं, सोच समझ के किए। हर एक पड़ाव पे, हर एक स्टेप पे मैंने ऐसे गाने, ऐसे शोज़, ऐसे कॉन्सर्ट्स किए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे आइडेंटिटी को, मेरे आर्टिस्ट्री को थोड़ा और बढ़ावा मिलेगा, अच्छे तरीके से बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ही ध्यान यही था मेरा बचपन से कि मुझे एक बहुत बेहतरीन सिंगर बनना है, मेरे क्राफ्ट पे ध्यान देना है। अगर मुझे कोई माइक दे दे स्टेज पे या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, मुझे खरे उतरना है उस चीज़ पे, मुझे 100% देना है और ऐसी सिंगिंग करनी है कि दूसरा जो सामने वाला है उसको लगे कि यार इससे बेटर तो कोई सिंगर है नहीं। अगर वो एक आप फीलिंग नहीं लेके आ सकते हो और उस टैलेंट पे आप उतना वर्क नहीं कर सकते, तो आई फील कि दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच टू हैव. Very very important for young singers to focus on the music and focus on the singing, and बाद में सब चीज़ें जो भी वायरलिटी है, सोशल मीडिया है, ट्रेंडिंग है, वो सब फॉलो अप हो जाती है. A romantic song you wish you had sung first? A romantic song that I had wish I had sung first. There's a song called चल वहाँ जाते हैं, जो अमाल ने कंपोज किया था और अरिजीत सिंह ने गाया था. I had wished कि मैं वो गा पाता. Bollywood
think suits your singing? Tiger Shroff and Siddharth Malhotra. One romantic song you dedicate to your fans. Pehla Nasha 2.0. थोड़ा गा के अगर सुनाओ। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता तू ही बता. What's your go-to karaoke song for a date night? Go to karaoke song for a date night would be Perfect by Ed Sheeran. If you had to propose to someone using just a song lyric, which one would it be? If I had to propose to someone, मैंने तो अभी शादी कर ली, अभी क्यों propose करूँगा मैं किसी को? आशना को अगर डेडिकेट करना होता कोई गाना तो आई वुड डेडिकेट, मेरा एक गाना है तू/यू, आई वुड डेडिकेट दैट सॉन्ग टू. या What's one love song you secretly dislike but everyone else loves? सीक्रेटली डिसलाइक, मेरा खुद का एक गाना है दैट आई एम नॉट टू लाइक हैप्पी दैट आई डिड दैट. कहता है पल पल तुमसे का एक हमने एक रिक्रिएशन किया था. दैट सॉन्ग पीपल रियली लव बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट. अच्छा, we have heard कि आपको मोहम्मद रफ़ी के गाने भी बहुत अच्छे हैं. जी. कौन सा गाना गाऊं उनका? दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल.